Assalamualaikum. Our today's topic is commercial law. Now, commercial law is a very vast area of law, but today we will discuss one aspect, which is contracts and their enforceability. When we talk about contracts in commercial transaction, so it is a very important aspect. Why? Because it provides a legal framework that ensures that okay, parties who are coming together for a business deal, they're on the same page. And it helps, what contracts helps is that they establish rights, obligations and expectations of each parties. इससे ये होता है कि there is a reduced risk of misunderstandings or disputes, and it also gives a sense of responsibility, a sense of security and enforceability, because जब दोनों parties contract करते हैं, जब उन्हें पता है कि ये rights and obligations हैं, तो एक especially written contracts में they serve as a piece of evidence in case कि कोई breach हो जाए or anything. जब commercial transactions की बात आती है तो contracts एक तो protect करते हैं आपके interest को, दूसरा एक trust और confidence जो business dealing में होता है उसको promote करता है. Now, what contract is or how which law deals with it? तो in Pakistan contract जो है वो Contract Act of 1872 डील करता है पाकिस्तान का. अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो सेक्शन 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इट डिफाइंस कि एनी एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. इस फ्रेज में देयर इज टू एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच इज एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबिलिटी. जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं द फर्स्ट पार्ट, तो हमें एक्ट में ही एग्रीमेंट की डेफिनेशन मिल जाती है, दैट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कोई भी प्रॉमिस या फिर कोई सेट ऑफ प्रोमिसेस जो बेसिकली serve as a basis of consideration in the exchange between the parties, that is called an agreement. Now, what promise is that when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. जब वो proposal accept हो जाता है तो it becomes a promise. जब सेक्शन 2B जो है वो बेसिकली कह रहा है कि कोई भी प्रॉमिस, कोई भी प्रपोजल व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, तो वो प्रॉमिस बन जाएगा. Now let's talk about what are the essentials of contract. According to section 10 of the Contract Act, all agreements are contracts if they are made by the free consent of the party competent to contract for a lawful consideration with the lawful object. इसमें 4-5 जो है essential elements दिए गए हैं. एक ये कि एक प्रॉपर ऑफर होगी और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होगी. एक प्रपोजल, जो ऑफर है वो एक प्रपोजल देगा और वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर वो एक लॉफुल कंसिडरेशन होगी. देन अगेन पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट. सेक्शन 11 जो है वो ये कहता है कि पार्टीज, वो एक क्राइटेरियन बताता है कि पार्टीज कब कॉम्पिटेंट होती हैं. एक ये कि वो एज ऑफ मेजोरिटी हो. सेकंड, that he is sound mind. Third, he is not disqualified from contracted by any law of the country. Fourth is that free consent होना चाहिए. Fifth, lawful object. We will discuss them in details later. Then sixth is that agreement should not be declared void or illegal. कोई ऐसा object आपका ना हो कि जो illegal हो और बाकी जो legal formalities है वो भी पूरी हुई हो. जब हम कॉन्ट्रैक्ट जो है कर रहे होते हैं तो फर्स्ट जो हमारे पास एसेंशियल है दैट इज प्रपोजल. नाउ प्रपोजल इज जब एक बंदा ही signifies his willingness to do something or to abstain from doing something. So that is the act of abstinence or the act of doing something is called proposal or offer. Now his mere expression कि वो he is willing to do something, वो ऑफर नहीं कंसिडर किया जाएगा. सपोज इफ ही सेज जस्ट कि वो सोच रहा है किसी चीज का मगर वो ऑफर नहीं कर रहा. सपोज पार्टी ए जो है पार्टी बी को सिर्फ ये कह रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक बल्क ऑफ सपोज कार के स्पेयर पार्ट्स ले लूं. पार्टी बी अगर वही काम कर रही है और अगर पार्टी बी को ऑफर क्लियरली ऑफर नहीं कर रहा कि मैं आपसे स्पेयर पार्ट्स का एक बल्क लेना चाहता हूँ, कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, तो वो ऑफर नहीं कंसिडर की जाएगी.
सेकेंडली, ऑफर में जो है, जब एक बंदा ऑफर कर रहा होता है तो वो कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी को, और उसमें कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसकी नॉन कंप्लायंस जो है वो अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इट मीन्स कि जब ऑफर जो है वो ऑफरी को कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन ना दे दे कि अगर वो टर्म एंड कंडीशन पूरी ना हो तो इट विल इम्प्लाई दैट द ऑफर इज एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टी ए जो है पार्टी बी से कह रही है कि आई वांट टू सेल यू दिस कार, बट साथ में ये कंडीशन लगा देती है, बट दैट इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड, मुझे आप एक दिन में या 2 दिन में रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो वो आपकी ऑफर कंसिडर होगी कि वो एक्सेप्टेड है। ऐसी कंडीशन आप नहीं लगा सकते ऑफर में, वो ऑफर जो है इनवैलिड होगी। नाउ जब आपने प्रपोजल दे दिया, तो अब जो ऑफरी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ऑफरी। सेक्शन 2B जो है, it states that when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जब ऑफरी जो है वो assent दे देता है अपनी, तो वो it is considered to be accepted। अब जब हम acceptance की बात करते हैं, there are certain rules जो acceptance में भी apply होते हैं। First of all, कि acceptance जो है आपकी must be absolute and unqualified। It should be clear, एंड अगर वो कंडीशनल हो जाएगी तो दैट बिकम्स अ काउंटर ऑफर, और वो एक्सेप्टेंस नहीं, वो फिर काउंटर ऑफर कंसिडर की जाएगी। देन अगर उसने एक्सेप्ट कर ली है तो उसने कम्युनिकेट करना है टू द ऑफर। नाउ अगर द थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रिस्क्राइब। सपोज फॉर एग्जांपल, जो भी ऑफर है, ही सेज कि आप मुझे थ्रू वाया ईमेल या वाया एसएमएस और वाया कॉल आप मुझे कन्वे कर दें कि यू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। तो अगर तो उसने मोड प्रिस्क्राइब कर दिया तो इट्स बेटर कि आप उसी मोड में उसको एक्सेप्टेंस जो है उसको कन्वे करें। फोर्थ इज कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। नाउ reasonable time obviously depends from case to case, तो whatever the particular case is, उसमें जो भी reasonable time होगा, तो offeree must convey his acceptance or his rejection within reasonable time। The third point is lawful consideration. According to section 2D, consideration is defined as when at the desire of the promiser, the promisee has done or abstained from doing something. That act of abstinence or the act of doing is considered as promise, is considered as consideration for the promise. Simply consideration in simple words ये होता है कि something in return। जब एक एग्रीमेंट जो है वो हम कहते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन है दोनों साइड्स पे, तो उसमें भी सर्टन रूल्स हैं कि वो कंसिडरेशन किस तरह की होनी चाहिए। नाउ वो कंसिडरेशन कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं हो सकती जो कि लॉ में फोरबिडन हो, या उसकी कोई नेचर ऐसी हो जो कि डिफीट करी हो किसी प्रोविजन ऑफ लॉ को, और या कोई वो फ्रॉडुलेंट हो, और इधर या फिर वो किसी बंदे को या किसी प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करी हो, या फिर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। अब कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो मनी, गुड्स, सर्विसेज, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसमें यहाँ पर देयर इज अ केस ऑफ एमएस पाकिस्तान स्टील्स मिल्स कॉर्पोरेशन वर्सेस एमएस हबीबुल्ला एसोसिएट्स। इसमें कोर्ट ने, इट इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट related to lawful consideration। Here it is, the court has ruled कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा जब in the court of law। Then the fourth point is free consent। जब हम कंसेंट की बात करते हैं तो दोनों पार्टीज का कंसेंट होना लाजमी है, म्यूचुअल कंसेंट होना लाजमी है। मीनिंग कि दोनों पार्टीज एक ही चीज पे एग्रीड हैं अपॉन, और इन द सेम। अ कंसेंट इज, वो तब प्री कंसिडर किया जाएगा अगर इट इज नॉट caused by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation or mistake of law। जब एक पार्टी जो है वो ट्रांजैक्शन दोनों पार्टीज में हो रही है और एक पार्टी का कंसेंट नहीं है ड्यू टू एनी ऑफ दीज रीजन, या तो वो कोर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो एग्रीमेंट जो है वॉइडेबल होगा ऑन द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी। मोस्टली ऐसे केसेस जहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पर एक पार्टी जो है वो हैज मोर पावर देन द अदर पार्टी, तो वहां पर अक्सर अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कोर्जन से जो है कंसेंट ले लिया जाता है। यहाँ पर जो है कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो वीकर पार्टी को प्रोटेक्ट करती है,
और अदर दूसरी पार्टी पे जो होता है, इट हैज द बर्डन ऑफ प्रूविंग कि ये अनइन्फ्लुएंस नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में। म्यूचुअल कंसेंट जो है which is free from any coercion is important in order for the contract to be valid. अब नेक्स्ट जो है वो बात आती है ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। अब अगर एक एग्रीमेंट जो है दो पार्टीज कर रही हैं, वो एग्रीमेंट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि उसका जो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल नहीं होगा। इट इज फॉरबिडन कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा पर्पस है आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, या कोई सी प्रोविजन ऑफ द लॉ को डिफीट कर रहा है, या वो फ्रॉडुलेंट है, या इट इम्प्लाइज कि वो किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजर करेगा, या इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, तो वहां पर जो है वो एग्रीमेंट इलीगल होगा या एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो कोई पार्टीज जो है वो ये डिसाइड करती हैं कि काउंटरफीट मनी का कोई या काउंटरफीट गुड्स का जो है वो बिजनेस या कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है आने में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज नॉट लीगल, तो इसीलिए वो जो है it is it will be an invalid contract. Now let's there are different types of contracts। जब हम बात करते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की या फिर जनरली जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, तो इट इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि बेसिस ऑफ वैलिडिटी पे है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो भी हमने बात की है वो सारे जो है वो फुलफिल हो रहे हैं और वो इन्फोर्स्ड बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 2J जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। कौन है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, सेकंड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2J जो है वो बात करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनली was entered to be a valid contract, a binding contract, but it subsequently कोई ऐसी कंडीशन जो मीट नहीं हुई या कोई भी ऐसी इलीगैलिटी हो गई है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इफ सपोज फ्री कंसेंट की जब हमने बात की, तो फ्री कंसेंट में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कोercion या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाए तो वो फ्री कंसेंट नहीं होता। इन सच केसेस जो एग्रीव पार्टी है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को दे हैव द ऑप्शन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, तो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड वॉइडेबल। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सपोज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर कोई ऐसी प्रोविजन ऑफ द लॉ जो कि आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जो आपकी कोई भी प्रोविजन ऑफ द लॉ को डिफीट कर रहा है या फिर कोई इलीगल आपका ऑब्जेक्ट है, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलीगल। नाउ सेकंड टाइप जो आपकी कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसमें आपके पास जो है फर्स्ट आ जाता है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपने एक्सप्रेस टर्म्स में इन रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में एट द टाइम द फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट किया। इम्प्लाइड आ जाता है जहाँ पे one an implied contract is one which is inferred from the acts or the conduct of the parties। वो आपके express words नहीं होते but your act and your conduct shows that this according to circumstances of the cases जहाँ पे proposal or acceptance is made otherwise than the words, तो वहां पर जो है वो implied contract होगा। then there is quasi contracts। quasi contracts जो है वो strictly contracts हम नहीं कह सकते because there are times जब पार्टीज की इंटेंशंस नहीं होती टू एंटर दम। इट इज एन लीगल ऑब्लिगेशन जो कि इम्पोज की जाती है ऑन अ पार्टी who is required to perform it। A quasi contract जो है is based on the principle that a person shall not be allowed to enrich himself at the expense of the other। Then हमारे पास आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आता है जो कि
जिनमें से कोई एक पार्टी ने जो है कोई ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म करनी होती है, परफॉर्म कर दी होती है। उसके बाद यूनिलैटरल आ जाते हैं, जहां पर सिर्फ एक पार्टी ने जो है ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन करनी थी, अदर पार्टी। देन सेकंड इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है जहाँ पे दोनों पार्टीज ने ऑब्लिगेशन जो है दोनों पार्टीज की आउटस्टैंडिंग है एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट्स विद एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। जब हम स्पेसिफिकली कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। सपोज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, जिसमें आप ये ऐसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने देयर इज द पॉसिबल जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये है कि आप कोई गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स जो है वो उन चीजों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर ए पार्टी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया पार्टी बी से कि मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपसे कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो वो उसकी जो भी उस सेल की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, जो भी कंसिडरेशन होगी, उसका जो सारा कॉन्ट्रैक्ट वो सेल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। देन सेकंड इज सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट। सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस जो है वो हायर करिए एक मार्केटिंग एजेंसी को कि वो उनकी सोशल मीडिया कैंपेन रन करें, तो उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीजें आ जाएंगी कि स्कोप ऑफ द वर्क क्या है, पेमेंट टर्म्स या अदर रेलिवेंट जो भी डिटेल्स हैं वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगी। देन अगेन द थर्ड टाइप वी कैन से इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जहां पर टू इंडिविजुअली टू कंपनीज जो है वो कोलैबोरेट करते हैं और एक एस्टेब्लिश करते हैं पार्टनरशिप। वहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपके राइट्स, आपके दोनों पार्टीज के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगा उस पार्टनरशिप में, वो सारा आ जाएगा। देन हम एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। उसमें अगर आप कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, तो वहां पर जो है वो जो भी आउटलाइन टर्म्स होंगी, जो भी एम्प्लॉयमेंट की कंपनसेशन, बेनिफिट्स, वर्किंग आवर्स हो गया, अदर एलिमेंट प्रोविजंस है, उसमें वो सब कुछ आएगा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हमने फॉर्मेशन की बात कर ली, नाउ इन्फोर्सिबिलिटी की बात आ गई। जब कॉन्ट्रैक्ट में आपने टर्म्स लिख दी कि अच्छा अच्छा इस तरह इन्फोर्सिबिलिटी होगी, ये टाइम पीरियड आपने फॉर एग्जांपल पार्टी ए ने पार्टी बी से कुछ स्टॉक खरीदा है और उन्होंने कहा है कि 3 मंथ्स में इसकी डिलीवरी हो जाए। अगर वो इन्फोर 3 मंथ्स में वो परफॉर्मेंस नहीं होती, तो उसका जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। फर्स्ट जो कैटेगरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, फर्स्ट मोड जो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है वो है फेलियर टू परफॉर्म। अगर एक पार्टी जो है वो अपनी साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल करी, तो वो इट कैन रिजल्ट इनटू ब्रीच। दिस कुड इंक्लूड कि नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स या सर्विसेज जो भी एग्री किया गया था कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो नहीं फुलफिल हुआ हुआ तो वो फेलियर टू परफॉर्म एंड दैट कॉजेज अ ब्रीच। नॉन पेमेंट, फॉर एग्जांपल अगर तो एक पार्टी ने जो है गुड्स डिलीवर करने थे और उसके बदले में उनको पेमेंट मिलनी थी, अगर उन्होंने गुड्स डिलीवर कर दिए और पार्टी दूसरी पार्टी ने उनको नहीं पेमेंट की, तो वो जो भी टाइम पीरियड विच वाज फिक्स फॉर द पेमेंट, अगर उस टाइम विद इन दैट टाइम फ्रेम अगर पेमेंट नहीं हुई, तो इट विल बी कंसिडर्ड नॉन पेमेंट एंड इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वायलेशन ऑफ द टर्म्स, अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई की गई हो, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर कोई क्लॉज हो या नॉन कम्पीट क्लॉज हो, तो वहां पर जो है अगर वो टर्म्स वायलेट करते हैं कोई भी पार्टी, तो इट विल बी कंसिडर एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन देयर इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिससे इट इज इम्पॉसिबल कि एक पार्टी जो है अपनी फुलफिल कर सके ऑब्लिगेशन, तो इट कैन रिजल्ट इन ब्रीच। अब वो कोई circumstances, it can be natural disasters, it can be government regulations, or it can be events which are beyond their control. जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो एग्रीव पार्टी होती है उनके पास कोई ना कोई रेमेडी अवेलेबल है, क्योंकि जो भी एग्रीव पार्टी है दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। ये मॉनेटरी कंपनसेशन हो सकती है, कोई भी लॉस अगर सफर किया गया है पार्टी, जो भी पार्टी एग्रीव्ड है, अगर उसने कोई लॉस सफर किया ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मॉनेटरी कंपनसेशन ले सकते हैं। द गोल ऑफ डैमेजेस इज कि जो इंजर्ड पार्टी है उनको उस पोजीशन में ले आए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता, तो जो भी उनकी सफरिंग है वो ना कॉज होती। देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
इन कुछ सम केसेस कोर्ट्स जो है वो ऑर्डर कर सकती है पार्टी को कि वो अपने ऑब्लिगेशन ही फुलफिल करें। और ये ज्यादातर तब जो है किया जाता है जब मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रेमेडी, फुलफिल द कॉज विच हार्म दैट वे दे हैव कॉज। देन रेसिसेशन, इस रेमेडी में आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो, दोनों पार्टीज जो है वो प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ जाती हैं। इट इज टिपिकली व्हेन द ब्रीच इज सिग्निफिकेंट एंड फंडामेंटल। Reformation. If there is a mistake or ambiguity in the contract, then a court may modify its terms to reflect the true intentions of the party. अगर कोई भी ऐसी एम्बिग्विटी या मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, तो वहां पर जो है कोर्ट जो है उन टर्म्स को मॉडिफाई कर सकती है ताकि पार्टी की जो है इंटेंशन है वो क्लियर हो जाए। If there are any questions, do let me know.
Can you hear me? So, अगर if a party to the contract dies, generally, uh, contract automatically does not get terminated. Rights और obligations जो है वो deceased के जो usually legal representatives होते हैं उन पर transfer हो जाते हैं. But from case to case ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जहां पर उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हो इन केस ऑफ डेथ वाली, तो वहां पर जो है जो भी एप्लीकेबल लॉ होगा वो इन्फोर्स हो जाएगा, या अगर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो उनके मुताबिक जो है फिर वो रेमेडी की जाएगी. अदरवाइज इन जनरल वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिसीज का पार्ट होगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे ट्रांसफर हो जाएगा. जी, अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो भी दो पार्टीज थी उन्होंने अगर कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखी इन केस ऑफ डेथ, तो वहां पर जनरल इन सेंस में जब बात करें तो वो लीगल एयर्स पे ट्रांसफर हो जाती हैं. अदरवाइज जो भी उन्होंने क्लॉजेस लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ डेथ कॉन्ट्रैक्ट में तो वो अप्लाई होंगे अगर कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेस टर्म्स हैं. अदरवाइज जो है जनरली अगर हम बात करें तो वो लीगल एयर्स पे ही ट्रांसफर हो जाते हैं और वही अगर कोई लाइबिलिटी भी है तो वो फुलफिल करेंगे. आई होप दिस आंसर्स. एनी अदर क्वेश्चन?
पागल औरत गिर जाएगी बेटा। Can I help?